हमारे पाकिस्तान लाइव। और आज हम बहुत ही ख़ास मौके पर लाइव हुए हैं। आज के दिन लाइव आने का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि हम आपको बता सकें कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सिचुएशन जारी है उसके हवाले से एक टीवी चैनल्स के ऊपर एक लाइव ब्रीफिंग दी जा रही है DG ISPR की जानिब से, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि ये जंग किस तरह से शुरू हुई है, इसमें किस किस किस्म की फेक इंफॉर्मेशन, वेग इंफॉर्मेशन, हाफ ट्रूथ और हाफ स्टोरीज एडिड थी। आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है वो ख़ास तौर पर ऑर्गेनाइज़ की गई थी DG ISPR की जानिब से, जिसमें पाक फ़ज़ाइया और पाक नेवी के भी अहलकार शामिल थे। और इन तमाम लोगों ने अपने अपने डोमेन्स में रहते हुए इंटरनेशनल मीडिया को, यानी कि पाकिस्तान में मौजूद जितना फॉरेन मीडिया है, उनको ये ब्रीफ किया है कि वो किस तरीके से पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, फैक्चुअल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस वक्त शुरू की तो उसका पहला जो चंक है तकरीबन 7 से 10 मिनट का, उसमें उन्होंने ये बताया कि पहलगाम में जो वाक़या हुआ है वो किस तरह हुआ और उस वाक़े के फ़ौरन बाद किस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट एक ऑपरेशन साजिश और उसके बारे में बात करना शुरू की गई कि किस तरीके से पाकिस्तान ही है जिसने उस वाक़े को करवाया है। तो अभी तक क्योंकि इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात नहीं आई हैं, मज़ीद इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भारतीय मीडिया है वो उसके ऊपर रिपोर्टिंग शुरू कर चुका था उस वक्त। तो ये थी वो सिचुएशन जिनके ऊपर DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले चंक में बहुत डिटेल से बात की। उसमें उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से 10 मिनट के अंदर पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद FIR लॉन्च हो जाती है, किस तरीके से जो दहशतगर्द जो पाकिस्तान की कश्मीर वाली साइड से भारतीय कश्मीर यानी कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में दाखिल हुए थे, वो वहाँ से फ़रार होने में भी कामयाब हो जाते हैं और उनसे इस बारे में और जो भारत की तमाम 7 लाख फ़ौज है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में मौजूद है वो उनको ट्रैप नहीं कर पाती है। लेकिन इन तमाम ये बताया कि किस तरीके से भारतीय मीडिया ने इस स्टोरी को पिक किया और उसके ऊपर अपडेट्स करना शुरू की, उसके ऊपर बातें करना शुरू की, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लीक आउट करना शुरू की और कच्चे पक्के AI टूल्स को इस्तेमाल करते हुए वो जितनी इंफॉर्मेशन, वेग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते थे वो उन्होंने अपनी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया। इससे ज़रा सा और आगे बढ़ते हैं हम, तो उन्होंने ये बताया कि जब पाकिस्तान में रमज़ान के महीने में, आपको याद होगा, एक हमारी ट्रेन हाईजैक हुई थी, BLA की जानिब से हाईजैक की गई थी, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पे भारतीय मीडिया किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा था, कवरेज कर रहा था, उसके बारे में बातचीत की, उसकी मुकम्मल तफसीलात बताई उन्होंने। और उन्होंने बताया कि भारत मुसलसल पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामूलात हैं उनके ऊपर दरअंदाजी कर रहा है और हर तरह से कर रहा है। इसके बाद जी हम बात करते हैं 6 और 7 मई की, उस रात की जब ये सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा और एक्सक्लेरेट हुई और हमने देखा कि पाकिस्तान में भारत की जानिब से जो 6 से 7 मकामात ऐसे थे जिनको टारगेट किया गया, जिनके ऊपर हमला किया गया और उस हमले के नतीजे में पाकिस्तान में 26 के करीब शहादतें हुई, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, बहुत से वाक़यात हुए। लेकिन फिर पाकिस्तान फोर्सेस ने वो करके दिखाया जो शायद दुनिया सोच भी नहीं रही थी। भारत जो 2019 में इस बात के दावे कर रहा था कि हम, अगर हमारे पास राफ़ेल होते, अगर हमारे पास अम, वो मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ होती जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, तो हम कहीं से कहीं पहुंच गए होते। और इसी के नतीजे में उन्होंने 2019 में ही एक एग्रीमेंट साइन किया, जो कि ख़ास तौर पर फ्रांस के साथ राफ़ेल तैयारों के हवाले से था। भारत की एयर फोर्स में 36 जो राफ़ेल हैं उनको इंजेक्ट किया गया और 6 और 7 तारीख को पाकिस्तान आर्मी ने वो कर दिखाया जो शायद भारत क्या बल्कि दुनिया के वहमो गुमान में नहीं था। पाकिस्तान की आर्मी ने दिखाया और पाकिस्तान की आर्मी ने ये बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान की फोर्सेस अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए, अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम तैयार रहती हैं। भारत के 5 लड़ाका
राफेल तैयारों को पाकिस्तान एयर फोर्सेस ने कामयाबी से निशाना बनाया, ऐसा कहना था डीजी आईएसपीआर का। और अब तक इसमें से आपको ये भी बताती चलूँ कि 3 तैयारे ऐसे हैं जिनकी कंफर्मेशन आज़ाद ज़राए से, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, और जो न्यूज़ या ऐसे इदारों के ऊपर काम करने वाले लोग हैं उन्होंने वेरीफाई करके बताया है कि 3 कन्फर्म राफेल तैयारे भारत के मुख्तलिफ मुकामात पे गिरे हैं। 2 भारत की तरफ से अभी तक, यानी कि 3 दिन गुजरने के बावजूद इसके ऊपर कोई प्रॉपर बयानिया सामने नहीं आया। उन्होंने कोई तरदीद नहीं की, कोई तस्दीक नहीं की। लेकिन आज ही की ये खबर है कि जो दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया हैं वो इस बात को कोट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ अपनी दफ़ा करते हुए भारत के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, भारत के मुख्तलिफ जो ऑपरेशन सेंटर्स हैं उनको टारगेट किया है और कामयाबी से पाकिस्तान ने राफेल तैयारों को भी निशाना बनाया है। अब जनाब हम बात करते हैं 8 मई की, कि 8 मई को क्या हुआ। 8 मई को फिर भारत ने मुख्तलिफ ऑपरेशन लॉन्च किए और हमने ये देखा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात में पे पाकिस्तान की जो एयर फोर्सेस हैं उन्होंने डिटेक्ट किया उन छोटे ड्रोन्स को जो हमें लाहौर, कराची, घोटकी, रावलपिंडी में गिरते हुए दिखाई दिए। इसके हवाले से भी डीजी आईएसपीआर ने अपने जो ब्रीफिंग है उसके ऊपर बहुत डिटेल से बताया है कि अब तक कितने जो व्हाट वी कैन से इट, अब तक कितने ड्रोन हैं जो गिराए गए हैं। तो कल जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने 25 जो ड्रोन हैं उनको कामयाबी से टारगेट किया है और वो तमाम के तमाम ड्रोन मार गिराए गए हैं। अगर मैं आज के दिन की बात करूं, आज है जनाब 9 मई। 9 मई की अगर मैं बात करूं तो 9 मई को अब तक जो भारत के ज़ेरे इस्तेमाल इसराइली साख्ता ड्रोन्स थे उनकी तादाद आईएसपीआर के मुताबिक 77 हो गई है। उनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ फ़िज़ाई हदूद में से टारगेट किया गया है और उनकी जो अभी उनके ऊपर मुशाहिदा किया जा रहा है, फर्दर एनालाइज किया जा रहा है कि किस किस्म की ये ड्रोन टेक्नोलॉजी थी। लेकिन भारत को इस हवाले से भी मुकम्मल तौर पर अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि ना सिर्फ पाकिस्तान की फ़ोर्सेस तैयार है, हमारी एयर फोर्सेस हर वक्त तैयार है, बल्कि वो जो एक नैरेटिव बन रहा है ना कि शायद हम इन तमाम इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के शहरी बिल्कुल पुरसकून हैं और मुकम्मल तौर पर तैयार है और मुकम्मल तौर पे इस बात का अदराक रखते हैं कि हम जो भी बात करें वो बहुत ज़िम्मेदारी से करें, क्योंकि हम भारतीय नहीं हैं और भारतीय जो टिपिकल साइकोलॉजी भी और मीडिया की एक जो थीरी है जो प्रोपेगेंडा वारफेयर पे चल रही है, हम बहुत बाइस्ड इंफॉर्मेशन नहीं देते, हम वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं जो हकीकत पर मबनी हो। और इसी को देखते हुए हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है भारत के हवाले से, उसमें पाकिस्तान के अवाम बहुत कामफुल है। अच्छा, 8 तारीख के हवाले से एक और आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। भारत के तमाम मीडिया पे ये बात चल रही थी कि भारत ने पेशावर में हमला किया है, भारत ने कराची पे हमला किया है, भारत ने लाहौर पे हमला किया है और इन तमाम हमलों में हर पाकिस्तान में तबाही मच गई है, लोग मर गए हैं, मिट गए हैं, लाइक तबाही तबाही है पाकिस्तान में। अच्छा, इस तमाम इंफॉर्मेशन के साथ जो फुटेज वो चला रहे थे वो मुझे नहीं मालूम, वो ना उन्होंने एआई से बनवाई थी, वो इंफॉर्मेशन ना उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू चलाई हुई थी, लेकिन वो बड़ी क्लैरिटी के साथ इस बात का दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्क छोड़ के चले गए हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा गायब हो गए हैं, पाकिस्तान में जो मिलिट्री के बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, आर्मी चीफ़ और एयर चीफ़, वो भी पाकिस्तान से चले गए हैं। तो भारत के लोगों के लिए ये पैगाम है कि कल रात को हम भी
एक जर्नलिस्टिक ग्रुप के साथ मौजूद थे जो कि मुख्तलिफ़ सिचुएशन के ऊपर दौरा कर रहा था। तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान में लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी, और यकीन कीजिए हम खुद रात को तकरीबन 1:30-2 बजे इस्लामाबाद के एक सेक्टर में चाय पी रहे थे, जिससे ये मैसेज आता है, जो शो होता है कि हम कितने पुरसुकून हैं, कितने तैयार हैं, कितने इन्फॉर्म्ड हैं। और सेकंड ये कि भाई हम जितने अरसे से जंगे कर रहे हैं ना, यू कांट थिंक ऑफ, आप सोच भी नहीं सकते। तो हम तो मुसलसल जंगों में रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा जंगों में रहने के बाद हमें ना रियली कंपोज्ड, इन्फॉर्म्ड, पुरसुकून रहने की एक आदत हो गई है। तो भारत अगर ये समझता है कि हम उसके इन छोटे मोटे हमलों से डर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम अपना मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, तो भाई बहुत क्लैरिटी के साथ बता दूं कि मैं तो एक फ़ीमेल होते हुए ये कह रही हूँ, आप मेरे मुल्क के एक छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे ना, तो वो ये बताने के लिए, ये कहने के लिए बिल्कुल तैयार होगा कि नहीं, हम ना डरते हैं भारत से, ना हम मरने से डरते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें आपको नहीं रोक सकती, तो तीसरी तो कोई चीज़ ही नहीं है ना दुनिया में जो आपको रोक सके। खैर जी, आगे बढ़ते हैं डीजी आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से। उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान ने कुछ लाइन रिकॉर्ड्स किए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो वो पास ऑन कर रहे थे अपनी मिलिट्री सोर्सेज को, उस रिकॉर्डिंग को उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को प्रेजेंट किया है, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि किस तरीके से इंडियन आर्मी मुख्तलिफ़ अटैक्स को प्लान कर रही थी, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में के हवाले से अपडेट दे रही थी कि अगली उनका लाहे अमल क्या होगा। और वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान आर्मी के जो टेक्निकल सेक्शंस हैं वो उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। अच्छा, इन तमाम इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँ कि अब 9 तारीख को हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ से पाकिस्तान नहीं बल्कि भारतीय आवाम भी ये कहना शुरू हो गई है कि पहलगाम वाक़या एक झूठ और फेक इंफॉर्मेशन पे मबनी इंफॉर्मेशन थी, जो शायद भारत की अपनी जानिब से प्लान की गई थी। तभी तो भारत उसकी इन्वेस्टिगेशन पे नहीं गया, बल्कि वो इल्ज़ाम लगाने के फ़ौरन बाद हमले करने वाली पोजीशन पे चला गया। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी देर के लिए मैं ये भी कोशिश करूँगी कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको किसी तरीके से वो लाइव रिकॉर्डिंग्स, लाइव जो रिकॉर्डिंग चल रही है डीजी आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग की, वो मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से उन्होंने ब्रीफ किया मीडिया को और क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। उसमें 5-6 ऐसे जर्नलिस्ट थे जो फॉरेन नेशनल थे, बाकी सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, क्योंकि शायद आपको ये मालूम होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त मेजॉरिटी जो जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ही हैं। और इंटरनेशनल मीडिया को यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया होते हुए काम करने की इजाज़त नहीं है। तो पाकिस्तान में जितने भी फॉरेन नेशनल जर्नलिस्ट थे उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया था, और उसके बदले में हमें ये नज़र आया था कि जो पाकिस्तान बेस्ड जर्नलिस्ट हैं उनको मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर होस्ट किया गया था। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन वो है जो आपको मैं टीवी की लाइव स्क्रीन से दिखा रही हूँ कि इंडिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रही थी, उसके बारे में डीजी आईएसपीआर ब्रीफिंग दे रहे थे। मैं थोड़ी सी आवाज़ तेज़ करती हूँ, मे बी आप समझ सके।
abducted, done, controlled, planned by India. And you don't have any evidence for Pahalgam? You cook up a story, this mantra, you listen just, I think yesterday. Yes, there are jihadi organizations because Pakistan has been doing this, because Pakistan has been doing this. Because Pakistan has been doing this, just because that, there is the evidence for that. That Pakistan has history. Which history? Tell us about this incident. We have for each and every incident, we can tell you how the Indian handled it. Your leaders are on public display. They are saying that we are going to do terrorism inside Pakistan. We are going to destabilize Pakistan. And please understand this, that Pakistan is the last bulwark state standing against this terrorism. This sleeping ideology, this perverted ideology that is coming from our West. If this country of 240 million plus people, if this terrorism, this perverted ideology takes roots over there, just feel the consequences of that for the world. Who is fighting against it on daily basis? We, the people of Pakistan, the armed forces, the security forces. The figures tell themselves, 190 operations per day since January 24, more than 77,000 counter-terrorism operations have been done by the state of Pakistan. We are fighting it on daily basis, and India is sponsoring and supporting this terrorist for its very myopic and short-term interest. If this bulwark state, which is fighting against this terrorism, not on only behalf of the people of Pakistan, but for the people of the world, if it's distracted, which is one of the objectives of the India, what consequences it will have for the region and the country. Also keep this thing in mind. Now on the pretext of action against this Pahalgam incident, their perpetrators, rather than giving credible evidence, what they started an oppression campaign against the Muslims and the Kashmiris in particular. This is what is happening right now in Kashmir. More than 50 houses have been bulldozed and blasted. More than 2,500 innocent Kashmiris have been taken into custody, God knows where. This is happening right now. This is the counter-terrorism operations that is going on. They are beating innocent people on streets, harassing girls. Please zoom out. See the bigger picture. The Indians want you to zoom in and just ask you and on that this is happening, this is happening. This is what's actually happening behind all this dirt that they are doing right now. This is continuing on daily basis. This oppression, what's happening on the streets of India to the Muslims and the minorities. We will chop whatever Muslim we find. Dogs and Muslims not allowed. This is happening in India.
against the minorities, which is working with the mindset, the egoistic mindset which is behind this military aggression. The problem here is what India is doing, that they are doing two things. They are externalizing their internal problems and they are internalizing their external problems. So oppression of the minorities, extremism and terrorism is an internal problem of India. Rather than addressing that, rather than addressing this oppression, this extremism, this rising Hindutva within India, rather than addressing it, they are, this internal problem, they are externalizing it by putting blames on Pakistan and other countries, that this terrorism and this extremism is being exported from here. It is not. It is their internal extremism and oppression, day in, day out, 24 hours, that the minorities, that the Muslims, that the Kashmiris, that the Sikhs and others are facing there. You need to address it at home. Please don't externalize it. And Kashmir, ladies and gentlemen, is an external problem. It is an internationally recognized disputed territory between two countries, with the decision to be made by the people of Kashmir. But you are internalizing it by putting more than 700,000 troops over there, by doing oppression over there, by changing its demography, by changing its status. So this is the main issue that is at hand. You try to put their mouths shut. Listen to this boy. That on 24th April, what he said and then what happened to this journalist. He's a journalist in Kashmir. What happened to him on 24th April? 7 लाख से लेकर 12 लाख की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो क्या करेंगे? पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मच्छी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहाँ से? Don't ask Kashmiris on this. Ask the security agencies. कितनी कंपनीज हैं यहाँ? RR है, SSB है, CRPF है, आर्मी है, BSF है, वो क्या जग मार रहे थे? गवर्नमेंट क्या करेगी? मैं उससे सवाल कर रहा हूँ आप सब लोगों के माध्यम से कि क्या कर रहा था गवर्नमेंट? होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, होम मिनिस्टर साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ये क्यों हुआ? And next day he has been picked up. God knows where he is. Now listen to this girl. She is a social media influencer. What happened to her? अपहरणकांड 1999, कारगिल युद्ध 1999, संसद पर आतंकी हमला 2001। She is just saying that why all these terrible incidents happen in the time when the BJP government is in power. और 2017 गोधराकांड 2002, पठानकोट आतंकी हमला 2016, उरी आतंकी हमला 2016, पुलवामा आतंकी हमला 2019, पहलगाम आतंकी हमला 2025। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर FIR, लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। You shut down all digital media that is coming from Pakistan or independent news agencies. You shut down the X and the other social media platforms because you don't have the capacity, you don't have the patience, you don't have the morality to listen to the truth. This is what's happening. This is why this aggression. So what they did was, after this Pahalgam happened, and we have seen briefly what actually is the truth of this Pahalgam, which they don't want to talk, because they don't have any answer to it. So let's go into the military part. Why? So that there is a diversion, there is a strategic diversion, and everybody is focused on the day-to-day activities. Like what happened in Pulwama, who did Pulwama, why it happened, nobody would do. Let's go and go over the militaries. We will not allow this to happen. That after every few years, you cook up a story. There is a terror incident. There is an incident that happens. You don't provide any justification. You don't provide any evidence to it. On the basis of that, you start ratcheting up the media, international media. You start building up false pretexts and narratives. And on the basis of that, you start attacking. And that's what they did.
on 6th and 7th May, they strikes Pakistan on multiple locations. In these strikes, drone that came inside, the total casualties, there have been 33 shaheed, out of which there are 7 all civilians, 7 female and 5 children. There have been 62 injured, all civilians, out of which again there are 10 females and 2 children. And in military we have 14 injured. So these are the locations where they killed innocent civilians. 2 years old. These are these training camps. These are from where these. God forbid. You kill 2 years old and you celebrate it. Look at the media. It is shameful the way they are celebrating these strikes. I think it's first time that we have seen that you shamelessly are celebrating killing of children. You are thumping your chest. Yes, that we have killed this 2-year-old Purva Zubair. And you are calling it a great national victory. 3 years old, Abba Bibi. 4 years old. Another 4 years old. Another 5 years old. This 7-year-old boy. 12-year-old. This girl. This small baby. This is what happened on 6th and 7th of May. Please remember this when you talk about what's happening on ground. And when you ask us that what Pakistan is going to do. Please remember these pictures. I ask you again, I request you to remember these pictures. They are in the conscience of the people of Pakistan and the state of Pakistan. India has killed innocent children on false pretexts. And they are thumping their chest. They are celebrating this killing of innocent. This is what they did to the mosques, to the places of worship. See the desecration of our Holy Quran. This is Murid Ke. This is the mosque that they bombed. See the Holy Quran. Tell me, please tell me, which religion allows this? Which humanity allows this? Which UN convention allows this? Which Geneva convention allows this? Which human rights allow this? And you celebrate it? And you say we have done a great deed to the Indian people and we have done a great deed to the world peace by taking out mosques, by taking out innocent children, by desecrating Holy Quran. This is Bahawalpur. They came on the night of 6th and 7th. They killed the innocent children. They desecrated the Holy Quran. This is what they did. Once they came, our proud Air Force took them on. They came in large numbers. 5 of their aircraft were shot down. 3 Rafales, 1 MiG-29, 1 Su-30, and 1 large combat UAV, multiple smaller UAVs. On the line of control, the Indians opened fire all along, indiscriminate fire, specifically targeting these civilians living on the Pakistan side of Kashmir. Specifically targeting the civilian populations. We have responded. We are continuously responding to this aggression. And we are only targeting the Indian military posts. We are being very careful because Pakistan, the state and its people and its armed forces do not believe in targeting innocent civilians. We have neither the culture nor our religion allowed nor our morality allowed that we target innocent people, that we target holy places. And I will show you the evidence that how precisely we are targeting only their military posts. So this is their brigade headquarters. This is their post. So we are targeting exactly from where the fire is coming on Pakistan.
only the military target. We are just showing you some parts of it. This is Hajipur sector, ring contour post, Bhavsar, water position. This is Danna top. This is the LP post. In continuation of what I said earlier, that one of the purpose of this Algam and the counter action that is going on is to distract the counter-terrorism operations of Pakistan. Just received a message that Indian-sponsored terrorist entity Fitna al-Kharij undertook an ID and attack on our forces in southwestern district, and we have suffered 9 shahadats. Attack through conventional forces, do terrorism through conventional forces against the innocent children and civilians. Make a pull on the conventional on the armed forces of Pakistan to move towards the eastern border, create voids so that they are sponsored proxies like Fitna al-Kharij and the terrorist organization operating in Pakistan, they can increase the tempo of the operation. The design is for the operation. This is also important to understand that once they attacked with their air on 6th and 7th May, so there were 57 flights which are operating inside Pakistan at that time, including international flights from Gulf countries, brotherly Gulf countries, from Qatar, from UAE, from Saudi Arabia, from China, Korean, Thai, and many other countries, also on domestic flights. And you put in danger thousands of civilians' lives once you started attacking them, once you started attacking the Pakistani airspace. And they also, in the process, took on shelling of the Neelam-Jhelum hydropower project, the Nusairy Dam. This also happened on the night. Question is, what sort of mindset is this? You are putting lives of the innocent civilian passengers in aircraft from different nationalities in danger. You are attacking hydropower projects, water, dams, the storage sites. And you don't want that anybody should talk about it. That nobody should question you about it. And then you create smoke screens of Pakistan attacking multiple places over there. I told yesterday also, I tell again, when we will attack, when we will give them a response, we don't need Indian TV channels to report it. The voice will be heard everywhere. Control state controlled media of Modi government to tell where and how we have attacked. These are the articles of the Geneva Conventions. And what they say, I'll just read one of them. Works and installations containing dangerous forces, namely dams, dikes and nuclear electrical generating stations, shall not be made the object of attack, even where these objects are military objectives. If such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses amongst the civilian population. These are the world norms. These are the protocols, the agreed protocols as per which the humans have decided to live their lives. The way we would like to live in a civilized world. Repeatedly you are saying that violation of one by one and one and one and one is happening. And then we saw yesterday and then today also, they are sending Israeli-made Harpy and Harop drones inside Pakistan. Swarm drone attacks. You must have observed it. They are sending it. We have so far taken out 77 drones, utilized them through hard kill and soft kill, and multiple locations they have come. Whenever these drones come, they are detected. They believe that they thought that they are very high tech aircraft and they will be able to go scot-free. They, I think, thought that these very sophisticated low cross-section drones, they can come and create havoc over there. We have taken each one of them out. Not one of them has been able to go back to India, and not one of them will be able to go back. So we watched each one of them. We detect each one of them. So don't think that anything that is coming from the east, we are not seeing. We are vigilant, and we will not let anyone put a cross on
short, we are collecting the debris from all over Pakistan. And these are our war trophies that we will rub on their faces. On the night of 6th and 7th, we ask them to pick up the debris from their side. This time the service we are doing for them. Whatever they are sending. And whatever they will send, we will convert it into debris. Let there be no doubt in it. You can see certain very few parts of this. Drones that they are sending, please keep on moving. And the damage that they are causing innocent civilians, innocent places, civil places. Now this is very, very horrifying that they carried a part of the swarm drone attack. They targeted the holy place of Sikhs in Nankana Sahib. Totally unacceptable. Pakistan Armed Forces trying to utilize this